भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी तपोवन जी महाराज की, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की, स्वामी दयानंद भगवान की जय हो। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय हो। साध्वी आनंद ज्योति जी, सभी गुरु देवताओं की जय, माता पिता की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्यायः ज्ञान विज्ञान योगाय। 24th श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते माम् अबुधयः परं भावम् अजानन्तः मम अव्ययम् अनुत्तमम्। न अहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ अयं न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम्। भगवान कहते हैं बुद्धिहीन पुरुष जो हैं वो मेरे अनुत्तमम अव्ययम, अव्ययम माने अविनाशी, परम भावम भाव को, अजानातः, अजानात माने न जानते हुए, अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे, माम मुझ सचिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म मानकर, अव्यक्तिम व्यक्ति भाव को आपन्नम प्राप्त हुआ मानते हैं। जो लोग बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन मीन्स जिन लोगों को भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो भगवान के सत्य स्वरूप को नहीं जानते और ना ही समझने का प्रयास अति करते, ना ही भगवान के स्वरूप को जानने का प्रयास करते, वो भगवान को शरीरधारी मानते हैं। वो मानते हैं कि भगवान कोई शरीरधारी है, कोई नाम और रूप है, चाहे वो मृत्यु लोक में हो चाहे वो वैकुंठ लोक में हो। ऐसा उन्हें लगता है कि भगवान कहीं है, चाहे वो मृत्यु लोक में श्री कृष्ण के रूप में हो, श्री राम के रूप में हो, या विष्णु रूप में हो, या कैलाश में शिव रूप में हो, कहीं पर भी हो, भगवान नाम और रूप। वो भगवान, दे थिंक मी एज बॉडी, भगवान को एक शरीर रूप मानते हैं। भगवान के सत्य स्वरूप को, भगवान के अनचेंजिंग नेचर को वो नहीं जानते। भगवान को बिना जाने, भगवान के स्वरूप को नहीं जानने वाले व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के स्वरूप को जानना ही एकमात्र उपाय है। एकमात्र उपाय जो है वो है भगवान के स्वरूप को जानना। जो भगवान के सत्य स्वरूप को जानता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो नहीं जानता वो भगवान को पूजता रहे, मानता रहता है और जीवन यापन करता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्रों में पड़ा अपने जीवन को यापन करता है। वो सिर्फ अर्थ धर्म और काम में ही व्यस्त रहता है। उसको मोक्ष को मालूम है उसको मोक्ष का, लेकिन वो मोक्ष को समझना नहीं पाता, क्योंकि उसे मोक्ष के बारे में करेक्ट नॉलेज नहीं है। मोक्ष का मतलब अपने ही स्वरूप के बारे में करेक्ट नॉलेज। अपने स्वरूप को सही न जान करके वो अर्थ धर्म और काम में ही व्यस्त रहता है। अपने सत्य स्वरूप को न जानने की वजह से वो अर्थ धर्म और काम में ही
पड़ा रहता है, अर्थ धर्म और काम को ही अपना लक्ष्य मान करके जीवन यापन करता है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं दोज हु लैक डिस्क्रिमिनेशन, नॉट नोइंग माई लिमिटलेस चेंजलेस नेचर बियॉन्ड विच देयर इज नथिंग ग्रेटर, look upon me who is formless as one endowed with the many with a manifest form, एक फॉर्म के रूप में देखता है। अबुयुद्ध अबुद्धया, अबुद्धया मीन्स दोज हु हैव इनसफिशिएंट विवेका, जो विवेक नहीं करते। व्हाई पीपल डोंट डू विवेका, ये सबसे बड़ा सवाल है। व्हाई पीपल डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट? Because of ajnanam, because of the priorities they have chosen. The priorities they have chosen is just to accumulate sadhans. The priority has become to accumulate sadhan. Sadhans have become the priority. Dhan has become the priority. House has become a priority. My name has become the priority. My fame has become the priority. Accumulating this satta has become priority. Accumulation has become the priority. Once the accumulation becomes the priority, you work for it. You work for only the priorities you consider good for you. You don't consider, you don't even know what the priority should be, what your priority should be, because of ajnanam, because of lack of ajnanam. This is what we were talking in yesterday's class, ji. Because of certain political and social and other reasons, the shastras were left behind. Correct understanding of shastras has been lagging. Correct understanding, even because it was lagging, nobody is interested, nobody took interest in shastras. Because of that lagging, shastras पीछे रह गए बहुत ज्यादा। शास्त्र को समझने वाले और समझने वालों को तो मालूम ही नहीं है, जो समझना चाहते थे वो उनकी प्रायोरिटीज बदल गई, और समझाने वाले धीरे धीरे सब लुप्त होते चले गए। तो शास्त्रों को सही प्रकार न जानना इज अबुद्धया। अबुद्धय मीन्स शास्त्रों को जो सही प्रकार नहीं जानता, जो शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करना। ही डजंट वांट टू गिव टाइम टू शास्त्रास। Nobody wants to give now because priorities have changed. You have to understand the correct priorities, ji. You need to understand, because accumulating sadhans is not the priorities. Whether you have sadhan or you don't have sadhan, Bhagwan says, I will give you the way if you want to reach me. Whether you have Mercedes car or you don't have a Mercedes car, whether you have Maruti car or if you have the intention of reaching me, I will provide you the sadhan. I have already provided you the sadhan, ji. I have given you legs. Continue, start walking and you can walk up to me. This is what Bhagavan says. I have given you the sadhans. And in the due course, because of your karmas, you might get some Mercedes or all that things. Don't worry. Don't waste your precious mind into all these petty things. Abuddhaya, the one who wastes his time, his energy, and his precious mind into accumulation is Abuddhaya. He is called Buddhihinam. Abuddhi, the one who has lack of discrimination. You have to understand this word very seriously. Abbuddhayam, Avyayam, those who don't understand my true nature, those who don't understand the priority of reaching me, there's those who don't understand my Swarupa, जो मेरे सत्य स्वरूप को नहीं जानते, जो मेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, my changeless nature, Avyayam, Anuttamam, beyond which there is nothing greater, there is nothing better you can get, ji. All accumulation, all dharma, artha, kama is in time. That is in time. It is all changeless. Only Bhagwan ka swarup jo hai, wo changeless hai.
इट इज चेंजलेस। बाकी सब चेंजफुल है, सब बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, धर्म बदल जाता है और काम बदल जाता है। योर डिजायर्स चेंज, योर प्रायोरिटीज कीप चेंजिंग टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, टूवर्ड्स accumulation. Only what doesn't change is Ishvara Swarupa. Ishvara Swarupa. So you must understand Ishvara Swarupa. Mama Param Bhavam, my limitless nature. Ishvara's limitless nature. Ajanatam, not knowing. जानता नहीं है, and he doesn't understand. The jiva doesn't understand the Ishvara's Swarupa. ईश्वर के स्वरूप को न जानना ही मम अव्यक्तम, me who is formless. He considers the formless as a given form. He considers वो जो मैं बिना, जिसका कोई नाम और रूप नहीं है, उसे किसी नाम और रूप में भजता है, पूजता है, मानता है, जानता नहीं। अगर जान जाएगा तो उसको नाम और रूप नहीं दिखेगा। जिसमें ज्ञान होगा, जो भगवान के सत्य स्वरूप को जान जाएगा, उसको जो भगवान के सत्य स्वरूप को जान जाएगा, उसे किसी भी नाम और रूप को मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मैं भगवान कृष्ण को मानता हूं, मैं भगवान राम को मानता हूं, मैं शिव को मानता हूं, मैं गणेश। ऑल नाम, ही विल द वन, only the one who understands Ishvara Swarupa correctly can say that I know Ishvara, that Ishvara is formless. He is nameless. There is no one particular name. कोई एक नाम, कोई एक given नाम नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। अबुद्धया means those who have insufficient viveka, those who don't put viveka, जो विवेक नहीं करते, जो अपने ज्ञान का सदुपयोग, जो प्राप्त है उसका ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं। अबुद्धया, अबुद्धय, हियर बुद्धया, बुद्धया मीन्स बुद्धिमान, और अ लगाने से अ मीन्स इनएडिक्वेसी, has used inadequately, जो अपनी बुद्धि को प्रॉपर, बुद्धि तो है, ऐसा नहीं है he doesn't have, he is buddhiहीनम, he is not buddhiहीनम, he is abuddhaya, he has the buddhi, he has the buddhi. Sometimes what happens is when somebody, कोई आपके पास आता है और कहता है कि I need money, please give me, then you say no, I don't have money right now to give, मेरे पास पैसा नहीं है, he says अभी पैसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि he doesn't have money, इसका मतलब है he is incapable of giving you the money right now. So everyone has buddhi, everyone has intellect, not using it right there is, that is abuddhaya. But if they lack viveka, they are called abuddhis, because due to aviveka they are not using the buddhi properly. जो अपने धन का सदुपयोग नहीं करते, अविवेकः, अविवेकः. This is what Bhagavan says. They are called abuddhis, people of limited discrimination. सिर्फ धन से नहीं है, ज्ञान से भी है, ये हर चीज के लिए लागू होती है। आपको, अगर आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, then you must provide these shastras to your children. Let them flow, let the shastras flow to your children. आज हमारे देश की समस्या, हमारे शास्त्रों की समस्या ये है, because of artha, dharma and kama, shastras are lagging, shastras are not being taught. No values, value for shastra is not taught. Value for artha is given, value for dharma is given, value for kama is given, but value for shastra is not given. The true value of shastra is not taught. The true value of reaching moksha is not taught, not being taught, sir. If this is not taught, if this is not given, then there is no way you are protecting your dharma.
You are not doing dharma correctly. You are not using your artha correctly. You are not using your kamas correctly. This is what Bhagavan is trying to explain. They look upon Bhagwan Vishnu as in a particular form. They keep looking. भगवान को मानते तो हैं पर भगवान को जानते नहीं. अव्यक्तम माम अव्यक्तिम अपन्नम मन्यते. They look upon me who is अव्यक्ता as व्यक्ता. जो अव्यक्त है, अव्यक्त माने जो सर्वव्यापी है, उसे एक जगह ही व्याप्त देखते हैं. जो सर्वव्याप्त है, अव्यक्त का मतलब, अव्यक्त का मतलब व्यक्त ना होना नहीं. जो सर्वस्व है, जो संपूर्ण रूप से है, उसे हम एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर नाम में मानते हैं. अव्यक्त हैज दिस मीनिंग. भगवान शंकरा सेज ही इज अपरक्ष, not known as an object. It is accessible to the means of knowledge we have, and therefore he is not known directly. The other meaning of avyakta is he is unmanifest. Because they lack discrimination, they look upon me as now endowed with a particular manifest. Manyate vyaktim apannam. I am considered to be Lord Vishnu who was in heaven. Vyaktin Vaikuntha and has now come here as Krishna. वो भगवान को किसी न किसी नाम और रूप में यहाँ पर आया मानते हैं. This is all we did in our last class, and we will continue what we were doing. Gaining Parmeshwara is sulabh. भगवान को जानना, मानना तो ऑलरेडी है. राइट फ्रॉम डे वन यू भगवान को मानना आरंभ कर देते हैं. बट भगवान को जानने के बारे में कोई नहीं बात करता, बिकॉज स्वयं भी नहीं जानते हैं भगवान को. भगवान के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ा एकमात्र कार्य, एकमात्र लक्ष्य इस जीवन का है, भगवान को जानना. लेकिन भगवान को जानने का हम कोई प्रयास नहीं करते. हम समझते हैं शायद भगवान का प्राप्त होना अति मुश्किल है. बट स्वामी जी सेज गेनिंग परमेश्वर इज सुलभ जी. इट इज वेरी इजी. It is easy. It is not difficult. Don't worry. I am the most easily available. I am the most easily available because I am nowhere other than you. This we will discuss. There are number of reasons why Ishwara is easily gained. Any accomplishment requires some effort. किसी भी कामना, धर्म करने के लिए भी you require effort. To do a dharma, you need effort. You need to go to some charity office and then you have to sign a check, and then you have to give a check, and this is all effort. You have to earn for giving charity. That is an effort. To accomplishment requires some effort. Even wearing the clothes require effort. Suppose you have a shirt that is little tight. When you are in great hurry, you would rather not wear it because it takes half a minute extra put it on. You want to avoid that extra time and effort. Now suppose you need some money, you have to put in effort. If you want power, you have to put in effort. If you want pleasure, you have to make an effort from your part. To create a pleasurable situation, you have to manipulate a lot of things. Only then you can relax and enjoy. And if you want to go to heaven, effort is involved. A lot of things have to be avoided and many things have to be done to attain, to accomplish. However, Bhagavan says that gain of Brahman is sulabha, is very easy. While going to Brahma Loka requires maximum amount of effort, gaining Brahman is no effort. Brahma Lok जाने के लिए तो बहुत effort की आवश्यकता है. You need lot of effort to reach Brahma Loka. But attaining Brahman, gaining Brahman is no effort. If it is argued that always dwelling upon Brahman is an effort, it is not.
अगर आप ये कहें कि हमें ब्रह्म के बारे में बार सोचना, कंटिन्यूअसली सोचना भी बहुत एफर्ट लगता है, बार बार हमें अपनी बुद्धि को कहीं से पकड़ के लाना पड़ता है. दिस इज व्हाट वी डिड इन संन्यास योगा जी, द लास्ट चैप्टर, 6th चैप्टर मेडिटेशन में. यू हैव टू ब्रिंग बैक योर बुद्धि विच इज भटकोइंग समवेयर. उसको लाने में एफर्ट लगता है. सो रीचिंग ब्रह्मन इज ऑल्सो, अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मन इज एन एफर्ट. भगवान सेज इट इज नॉट. In fact, there is no effort in dwelling upon what you love. If you love something, then you don't, it is not an effort. है ना? बहुत बार ये बात होती है. जिस चीज को आप ये दिस इज अ डायलॉग इन सम मूवी, जिसको मैं शिद्दत से चाहता था एंड समथिंग समथिंग समथिंग. शिद्दत से, if you love something, you gain it. There is no way you are not going to gain it. Everybody loves to stand before the mirror. Even an old man who has a cataract in his eyes and is not able to see well stands before the mirror and tries to look at himself. He tries to look at whom? Himself. See, the point is, you always want to look at yourself. In that looking at yourself, you just keep looking what you are not at. Why? Because of love for Atma here. It is not an effort, because love is not an effort. It is very natural. For Mumukshu, dwelling upon Parmeshwara is a matter of love. Those who want to gain knowledge, those who really want to attain knowledge will get it. They will have no problem gaining knowledge. They will never have, because they want to study, they want to understand Ishvara. It is very natural, because Atma is the nature of absolute love. एक बार इसके प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, एक बार आपका शास्त्रों के प्रति अगर लगाव हो गया, then there is no, because Shastra is not talking about anything else. Why you don't like beauty parlors much ji? एक beauty parlor के बाद दूसरा beauty, you change your beauticians also, you change your dresses also. Well, the dress you loved so much, you change it. Why? You change your beauty parlor also, because you are not, you love yourself. You love not this body. You don't love this name. You don't love this form. You love yourself. आप अपने आप को प्रेम करते हैं. The Atma. You love that Atma. The nature. It is your very nature. And the nature of Atma is absolute love. And in loving that, in understanding that, is in loving that Atma, you think yourself as this Nam and Rupa. And then you start decorating this body. You start decorating your name. That is why many people I see, they change their names, spellings also. Then there are certain other reasons. We'll not go into all those, because they are in love with the name, that this is my name, this is my Rupa. You want to decorate yourself, and in process of decorating yourself, you decorate this body. In decorating, अपने आप को सुंदर बनाने के, अपने आप को सुंदरता को प्राप्त होने के लिए आप अपनी शरीर को सुंदर बना लेते हैं, अपने नाम को, अपने रूप को सुंदर. So any form of love extended toward any object is, after all, for my own sake. अपने को बनाने के लिए है, अपने को सुंदर बनाने. अपने सुंदर बनाना नहीं है, आप तो ऑलरेडी सुंदर हैं, बस उस सुंदरता को पाने के लिए, just to understand, just to get into that sundarta, you try to make yourself sundar, beautiful. That object makes me pleased and therefore becomes an object of my love. Some object of this is my object of love. What I really love is my
pleased self, what actually you love, अब जो आप सतरूप से प्रेम करते हैं वह तो आप अपने आप से प्रेम करते हैं, not this physical body. You don't love this physical body ji, you love yourself. In process of loving yourself, because you consider this body as you decorate this body. Why do you decorate your clothes ji? Because when you wear, clothes become you. Clothes, this is when you go to some party, आज रात को शाम को जब पार्टी में जाते हैं तो you, the clothes also become me. So you wear beautiful, good clothes, nice clothes, looking handsome, looking beautiful. You wear those clothes. Because clothes also become me. You love yourself. That is the true love. You don't love clothes. Because you want to, because you love yourself, you wear such clothes so that you look beautiful. What I really love, my pleased self. What I really love is my pleased self, Atma. Since Atma is Parameshwara, though whose nature is Ananda, there is nothing more to be desired. There is nothing more. This is what you desire. Actually, you want to appease yourself. Appease yourself. आप करेक्टली सोचना आरंभ कीजिए. This is Viveka. Thinking correctly is Viveka. Being absolute fullness, Atma becomes the object of absolute love. Because it is the most desirable, dwelling upon it becomes joyous. बड़ा अच्छा लगता है. You like to go to beauty parlor because you are decorating yourself. Actually, you want to decorate. You are in love with yourself, the Atma, not this body ji. अगर बॉडी बहुत खूब अच्छी लगती, if you are in love with the body, then there is no requirement of decorating the body. Why do you decorate the body? You don't actually love your body, your this physical form. You love yourself. You love yourself. And this is natural ji. There is no problem in loving. This is what Bhagavan says. You are Ishwara and you are already there. Because it is most desirable, dwelling upon it becomes joyous. That is why enjoy. That is why most of the people enjoy shopping. They go buy clothes, they buy jewelry, they buy so many things to make them look beautiful. It is not a painful affair. Why it is not painful? Why shopping is not painful? For somebody who is spending, जिसका पैसा लग रहा है, he considers money and he feels the pain. So it is about your love, the utmost. Nothing new is produced either because Atma is already existent as Parameshwara. There is nothing. You actually love yourself. The result is not born out of effort. You don't require any effort. किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है अपने स्वरूप को पाने के लिए. It is already yours. You don't require to do any yama, yagya, japa, anything. You are already beautiful, Ji. You don't require to go to any beautician. You don't require any silk clothes or any kind of clothes to look. You are already existent as Parameshwara.
पूर्ण रूप से परमेश्वर स्वरूप हैं। द रिजल्ट इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ एफर्ट। और ये सुंदरता किसी एफर्ट से, किसी पुरुषार्थ से नहीं है। इट इज बॉर्न प्योरली ऑफ रिकॉग्निशन। व्हेन यू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, योर ट्रू नेचर, जब आप अपने सत्य स्वरूप को जान जाते हैं, यू अंडरस्टैंड द ब्यूटी, यू अंडरस्टैंड द सेल्फ, दैट इट इज देयर वाज नो पुरुषार्थ, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं थी अपने स्वरूप को सही प्रकार जानने से। There is no effort involved. Nothing new is added. Nothing old is removed. The accomplishment is of an already accomplished fact. Therefore, it is sulabha, easily gained. Atma is the knowledge about Atma, gaining Parmeshwara, परमेश्वर को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान के स्वरूप को जानने के लिए ना तो किसी भी तरह की किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। There is, even you don't require any text, जी। Text is just to guide you. You are already Parameshwara. Text is to guide you because you are considering yourself as Nam Rupa and this body. Text guides you that you are not Nam Rupa and body. You are just Parameshwara himself. So therefore, Parameshwara is Sulabh. Parameshwar Sulabh hai, absolutely yours. He is you alone. आप ही परमेश्वर हैं. Then you may argue that the removal of ignorance is an effort. ये अज्ञान हटाना तो effort है ना जी। आप ये argue कर सकते हैं. You can say that removing this अज्ञानम, किताब पढ़ना, टेक्स्ट पढ़ना तो पड़ेगा ना। गीता पढ़ना पड़ता है जी। गीता पढ़ने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है। इतनी मेहनत नहीं होती है। I can't put in so much of effort. So you may argue that removal of ignorance is an effort. In fact, you only recognize, and in the recognition, ignorance is removed. What is actually happening? You are recognizing. There is no effort required to know yourself. You have to just recognize. आपको तो सिर्फ अपने सत्य स्वरूप को जैसे ही जाना, it is already there. There is no snake which has to go. There is no snake which came and which has to go. You need a stick to beat it and kill it and then you have to. ऐसा कुछ नहीं है. सर्प को मार के नहीं भगाना है. सर्प को ज्ञान से जान करके, अरे ये तो सर्प नहीं है, ये तो रज्जु है. That is it. Recognizing your true Swarupa. And it doesn't take long also. It doesn't require much effort. This is what Bhagwan is saying. You do not do any action. किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं होता. People generally want to do something. अरे मुझे परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? Oh my God. परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए you should go for jogging for 5 kilometers in the morning. And then you must go 2, 3, 4, 5 kilometers in the evening also. परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए go for jogging. Actually, you don't have to do anything. You don't have to do any action. It is purely an activity of the pramana. Therefore, it is sulabha. Pramana means it is already proved. It is already there. It is already there. The one who is trying to understand the Swarupa is the Swarupa, is the Parmeshwara. The one who is trying to understand himself as Parmeshwara is Parmeshwara himself, ji. He is the Parmeshwara. Who is Parmeshwara? You yourself. Nobody. There is nothing else. You don't have to do anything else. You don't have to switch on the button also to illumine your Swarupa. Already illumined. In that illumined Swarupa, all this is, all what you see is being illumined.
जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट इज मी, मैं ही सब चीजों को प्रकाशित करता हूं. आई एम द लाइट, आई एम द सोर्स, आई एम परमेश्वरा. Therefore, Bhagwan says it is Sulabha. The one who dwells upon me is endowed with the mind which is tranquil, contented, and under control, in the senses that it does not have any problem with reference to reflection on Parmeshwara. Only the right mind can understand. जो माइंड पूर्ण रूप से विकसित है, जो बुद्धि पूर्ण रूप से मैच्योर्ड है, परिपक्व है, विकसित है, उसी बुद्धि में जिसका अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण शुद्धि का मतलब जिसकी इंद्रियां शांत हैं. नाउ दे डोंट रन. इंद्रियां, ऐसा नहीं है कि आंख देखना बंद कर दिए, आंख देखती है, कान सुनते हैं. इफ सम music is being played, yes, he will hear it. Yeah. And if the tune is very nice, he might shake his head also. Aha, what a music. But that music doesn't attract him. That music is one with him. He is one with the music. That is Parameshwara. His mind, his body, his everything is under control, and in senses that it does not have any problem. There is no problem at all with reference to reflection on Parameshwara. Whenever the mind is free, it goes toward Bhagwan, like a person who loves someone. The mind is very, very natural, very naturally goes toward the object of love. It does not require an appointment. Similarly, here the mind of Mumukshu, a Jigyasu, will naturally go towards the Paramatma. The one who has the Jigyasa, जो शास्त्रों को जानना चाहता है, उसकी बुद्धि शास्त्रों के प्रति आकर्षित होगी ही होगी. This is what Bhagwan is saying. You have understood the nature of Paramatma as something that is not different than yours. So where else will the mind go? जब आपने ये जान लिया कि आपका जो स्वरूप है वो परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, तो आपकी बुद्धि कहां जाएगी? परमात्मा में जाएगी. When you understand, when you recognize everything as Paramatma, until that take place, you continue to do Shravanam. अगर ये नहीं हो रहा है, keep on hearing Ishwara's song, keep on hearing Ishwara's Swarupa. Keep on. You continue to do Shravana. Keep listening. Will is used in the beginning and later for a very subject matter takes over. The will which was used to control senses and everything is now directed towards Parameshwara. I want to understand Parameshwara, so I will keep listening to Shastras and to the correct Shastras alone. Afterward, you do not require any will. जब ज्ञान हो जाता है, you don't even require the will. ये करने की इच्छा करने की भी जरूरत नहीं है. You just do. You are with the परमेश्वरा. मुझे परमेश्वर होना की इच्छा करने की जरूरत नहीं. I am परमेश्वरा. I am परमेश्वर. I don't even need to say this. बोलने की भी आवेगा. I am परमेश्वर. I have recognized it. It is not required at all to say. It is something like going to Kumbh Mela. You do not require a road map. All you have to do is get into the crowd, and that is going. All you have to do is just get into the crowd, into the bus, and you will reach. You get into the most crowded bus, it will reach to Kumbh Mela. All you have to do is get into the crowd that is going. Soon the momentum of the crowd is so great that even if you want to go back, you cannot. Most of the time when you travel in these metros, you don't have to get into the metro. The people push you and you you are in the metro. And you just have to will that now I have to get out. People will throw you out. You don't have to get out of the metro. People will throw you out.
People will get you in, people will throw you out. So your will should be to reach Ishvara. आपको अपने अपनी अपनी अपने जो शक्ति है विल करने की, कुछ पाने की, कामना की जो शक्ति है, अपनी काम शक्ति को, कामना को सिर्फ एकाग्र करके ईश्वर प्राप्ति के लिए लगाइए। अपनी कामना को ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति एब्सोल्युटली सुलभ है। इतनी सुलभ, it becomes like a ram ji, you just flow, you just keep moving. In Kumbh Mela, you just keep moving and you are in front of Ganga. This is exactly what happens here. Certainly, will is required until you get into the stream of thinking. Correct teachers say we are going to start another session of Bhagavad Gita very soon. So if you are really interested, then you must attend that class also, right from beginning. Right from chapter 1 to the last chapter we'll do. This will continue as it is. This will continue as it is. Every day 7:30 in the morning. But then we are starting another, and it will be a course. It will not be like a talk. It will be like a teaching. If you want to get in, this is what exactly you have to do. You have to just will to get into the stream of thinking, of understanding. Once clarity is there is no effort at all. कोई effort की आवश्यकता नहीं है. If you want your children also, you must get them. You must. This is what has happened. This is what has happened in last 100 years. Children are kept away from Shastras. बच्चों को शास्त्र से दूर कर दिया है, उन्हें शास्त्र के नजदीक ले जाइए, बाकी तो अपने आप हो जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी. इफ समबडी हैज दी संस्कारा, ही विल गेट इनटू. अभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, संस्कार होने के बावजूद ज्ञान तक पहुंचना मुश्किल है. संस्कार है पर ज्ञान तक नहीं पहुंचते. So if you also help them, please help your children. Put the they might have sanskaras of reaching Ishvara. If they are born in India, they are born in Hindustan, they are born as Hindus. Hindus ka matlab, we have so many times. Hindu, what does Hindu means? Heen and du. Hindu. Heen mane heenta. Agyanta is hin. And du is dur karna. Dur karna. Duryatam, dur karna. हीनता को दूर करना. हीनता इज अज्ञानम. अज्ञान को दूर करना is Hindu. If you are born as Hindu and you can't remove the अज्ञानम, what a श्राप could it be जी? इससे बुरा श्राप क्या होगा? Being a Hindu, you are not understanding your shastras. Being a Hindu, you don't want to understand Ishvara. You want to remain अज्ञानी. इससे बड़ा समस्या क्या हो सकती है? So push them. Just don't only push them for artha. Right? अभी आजकल क्या हो रहा है? You are pushing them for artha. You are pushing them for कामा. कामनाओं के लिए पुश करते हैं, अर्थ के लिए पुश करते हैं. जाओ अपना कमाओ, खाओ, अपना नाम रोशन करो, अपना सत्ता पाओ, यश कमाओ, धर्म कमाओ. But nobody pushes for moksha. Moksha doesn't means to die, ji. Moksha means to remove ajnanam. Bring your children also. Bring your children closer to Shastras.
All you have to do is to get into the stream of thinking, of understanding. Once clarity is there, there is no effort at all. Koi effort. Then they will, the artha, the dharma and kama will become joyous. इवन अर्थ धर्म और काम भी एफर्टलेस होंगे, बिना किसी एफर्ट के अर्थ होगा, धर्म होगा, कामनाएं पूरी होंगी, अगर आप ज्ञान के लिए आगे बढ़ेंगे. In the previous verse, Bhagwan said that these people who lack discrimination, not knowing my real nature, look upon me as someone who has a form. They think I am someone remote from them who has assumed a body and come here from another place. In fact, I am the whole world. I am the Atma of everyone. I am not somebody who has come from somewhere. I am not the person who has come from Vaikuntha and I am staying here. I am not the person. I am the entirety. मेरे स्वरूप को जानो, मेरे सत्य स्वरूप को समझो. इस श्लोक के अंदर भगवान यही बात समझाते हैं. जो लोग मेरे सत्य स्वरूप को नहीं जानते, वो मेरे को एक नाम और रूप के भांति समझते हैं कि मैं कहीं से कोई इनकार्नेशन हो गया, मेरा अवतार हो गया, एंड ऑल दैट. आई एम नॉट ऑल दैट जी. आई एम पूर्णम. मैं ही संपूर्ण रूप से हूं. I am the Purnam. I am not someone remote from some, I have, as if I have assumed the body and come here from another place. I am the whole world. I am the entirety. Whatever you think I am, whatever you think I am the thought. I am the Atma of everyone. This is my real nature. Changeless and beyond which there is nothing greater. और इसके ऊपर इससे ज्यादा जानने के लिए और कुछ है नहीं. There is nothing more you can know if you know your own Atma. If you understand yourself correctly, it is not understanding someone in Vaikuntha, it is understanding yourself. किसी को वैकुंठ में कोई बैठा है उसको नहीं जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है, अपने सत्य स्वरूप को जानना. भगवान शंकराचार्य says that what is the reason for this ignorance? अपने स्वरूप को न जानने का क्या रीजन है? Why people don't understand? Why are they not understanding? Why do they worship other devatas and pursue smaller ends? क्यों लोग सिर्फ छोटी छोटी कामनाएं करते हैं? क्यों लोग सिर्फ धर्म, काम और अर्थ के लिए ही प्रेरित रहते हैं? Why do people not directly seize Lord? क्यों नहीं डायरेक्टली वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए? भगवान points this out in the next verse. अगले श्लोक में भगवान इसका एनालिसिस करते हैं. भगवान says न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत्तः मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकः मामजम अव्ययम. योग माया. Now this is a very interesting topic which actually we'll do tomorrow, but then we'll start it today. योग माया मने मैं अपनी योग माया से समावृत्तः छिपा हुआ, अहम मैं, सर्वस्य सबके, प्रकाश प्रत्यक्ष नहीं होता. I am non-understandable by everyone. मैं किसी के ऐसे हर किसी के समझ में नहीं आता. सिर्फ हिंदू होने से हीनता दूर नहीं होती, अज्ञानता दूर नहीं होती. हिंदू होने से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है. You have the opportunity of understanding ईश्वरा correctly. भगवान कहते हैं सर्वस्य सबके प्रकाश प्रत्यक्ष नहीं होता. अयम यह मूढ़ अज्ञानी लोकः जन समुदाय माम मुझे अजम जन्म रहित अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को नहीं अभिजानाति जानता.
अर्थात मुझको भी जन्म मरने वाला ही समझता है. Does not understand me correctly. The one who doesn't understand, the one who doesn't have the correct ability, who is not using his mind, who is not using his buddhi correctly, doesn't understand me. ये जो मनुष्य शरीर दिया है, इस मनुष्य शरीर का अगर कोई सही प्रकार पालन नहीं कर रहा है, if he is not using his brains, if he is not using his buddhi correctly, then he will not reach me, he will not understand me, he will also take me as जन्मने मरने वाला, like himself. He will keep, मुझे जन्मने मरने वाला मतलब अपने आप को ही जन्मने मरने वाला समझते हुए संसार के भोगों में ही लीन रहता है. This is what Bhagavan is saying, and we'll do this very nicely ji. Yoga Maya samavrattah, completely covered by Yoga Maya. We are going to discuss Yoga Maya this time. Yoga Maya mane this Maya, this Agyanam. Yoga Maya is Agyanam. Sarvasya, for everyone. Na aham prakasha, I am not recognized. Ayam lokaha, this person. Moodaha, being deluded. The one, Yog Maya kiske liye hoti hai? The one who is not using his buddhi properly. From a jiva's standpoint of view, he keeps on seeing. And whatever he sees from jiva's standpoint of view is Maya. Therefore, he sees Yoga Maya, is Maya. This is what we will understand. Is deluded, he is deluded. वो मायावत है, माया के जाल में फंसा हुआ है. Ajam, one who is unborn. Avyayam, one who is changeless. He is being deluded. Deluded of what? Deluded of understanding. The one who is unborn, जो कभी नहीं पैदा होता, जो कभी नहीं बदलता. मैं न अभिजानाति, does not understand me clearly. भगवान की इस श्लोक को दो तरह से समझना चाहिए. एक तो है completely covered by योग माया. माया is what? United with the three gunas. तीन गुण कौन से हैं? सतो, रजो और तमो गुण से. Completely covered. I am not recognized by everyone. Those who are covered with all these three gunas cannot see me. This deluded person does not know me clearly as the one who is unborn and changeless. They don't see me as the reality. They keep seeing me as this physical form. वो मुझे इस नाम और रूप में ही देखते रहते हैं. They keep seeing me as this नाम and रूप alone. और दूसरा है I am completely covered by Maya united with the three gunas. मैं ही गुणों, इन तीनों गुणों से covered हूं. I am not recognized, मुझे कोई नहीं पहचान पाता. A person is deluded and does not know me properly. As the, या तो उसकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है, और अगर बुद्धि पे नहीं है तो वो लाइट नहीं जला. He is not trying to understand. He is not moving towards Shastras. He is not understanding the Shastras. This is called covered with Maya. जानना तो चाहता है पर शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते. शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता is covered. भगवान is covered by Maya. शास्त्र क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि वो अर्थ, धर्म और काम में ही फंसा हुआ है. अर्थ, धर्म और काम की चादर ओढ़ के सोया है. भगवान को अर्थ से, धर्म से और काम की चादर उड़ा के रखी हुई है. He doesn't want to remove that chadar. Complete. That chadar is Maya. The chadar of Maya is not being removed. A person is deluded and does not know me properly as the one who is unborn and changeless. He is not trying to understand. उस चादर के उसने माया की चादर से भगवान अपने मेरे को कवर कर रखा है. मुझे कवर करके और वो इस संसार में विचरता रहता है और भगवान भगवान करता हुआ भटकता रहता है. इसकी एक्सप्लेनेशन स्वामी जी देते हुए कहते हैं, न अहम प्रकाश सर्वस्य, आई एम नॉट नोन टू द पीपल, टू ऑल पीपल.
मैं सबको समझ में नहीं आता हूं, आई एम नॉट नोन, सब मुझे नहीं जान पाते। न हम प्रकाशः मीन्स आई एम नॉट, आई डू नॉट कम टू लाइट, आई डू नॉट कम अंडर एनी लाइट। ऐसा नहीं है कि मैं किसी रोशनी में आऊंगा और दिखूंगा। Even the people who see me now see me as this boy from Vrindavan. People see me as Krishna, Bhagwan Krishna. They are not seeing, जो लोग बांके बिहारी भी जाते हैं, they are actually not seeing Parameshwara. They are seeing a boy. और उसके नाम और रूप से मोहित हुए हुए हैं। This is Maya. This is Maya. You have to understand. This name and roop is Maya. From a Maya drishti, from Maya upadhi, you see Maya only. We'll discuss this. This is going to be uncovered completely. Absolutely, Maya will be uncovered. Even the people who see me now see me as this boy from Vrindavan. They do not recognize me Ishwara at all. वो मुझे ईश्वर रूप में जानते ही नहीं है। मैं सारी, भगवान ने कहा, मैं सारी की सारा जीवन लीलाएं कर करके, हर लीला के अंदर अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से मैंने बताया, प्रत्यक्ष रूप से मैंने अपने स्वरूप के दर्शन कराए, पर लोग नहीं, दे जस्ट गॉट इन सोक्ड अप इन द लीलास. They didn't understand my swarupa through leelas. उन्होंने मेरे स्वरूप को लीलाओं के, मेरे स्वरूप को लीलाओं, मैंने सारी जीवन लीलाएं करी so that लोग मेरे स्वरूप को जाने, पर नहीं जान पाए. Even I did all the leelas in front of you, you didn't understand my swarupa, Arjun. I have to recite entire Gita for you. इसके बाद ऑल्सो दिस इज द, ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता भगवान के स्वरूप का वर्णन भगवान ने, दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट लीला ही इज डूइंग, दिस इज लीला, लास्ट लीला ऑफ सिंगिंग हिज ओन स्वरूप सॉन्ग. पर इसके बाद भी भगवान को 2 बार और सॉन्ग अपना गीता सुनाने, उद्धव को बताना पड़ा अपना स्वरूप. He just kept on teaching his Swarupa right from the day he was born, right from the day he took avatara. He kept on teaching, he kept on telling about his Swarupa. In Mathura, in that jail of Kansa, he taught his mother and father about his Swarupa. भागवत पढ़ते नहीं ना, भागवत को सुनने जाते हैं, सो जाते हैं, वहां पे नाच गाना करते हैं, भजन गाते हैं, उनमें बह जाते हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते. This is what Bhagavan is saying here. They do not recognize me as Ishwara at all. Lord says, I cannot be known by all people. भगवान शंकराचार्य adds here. शंकराचार्य भगवान और ऐड करते हैं, स्वामी जी छोड़ते नहीं है. He says that the Lord can be seen only by certain bhaktas, only certain seekers. भगवान सिर्फ कुछ ही जिज्ञासुओं को, कुछ ही सीकर्स को प्राप्त होते हैं. It means Ishvara come to light only for those who seek me and are qualified to recognize me, not to everyone. भगवान सबको नहीं मिलते, भगवान सबको प्राप्त नहीं होते. जो लोग शास्त्र की रोशनी से भगवान को, भगवान की माया को हटाते नहीं हैं, भगवान उन्हें प्राप्त नहीं होते. वो भगवान, ऐसा नहीं है कि वो भगवान के भक्त नहीं है, वो भगवान को मानते हैं, पर भगवान को जानते नहीं है और जान भी नहीं पाते. अब until and unless you come to shastras, until and unless you understand, you do Bhagavad Gita thoroughly,
भगवत गीता थॉरली अगर नहीं करेंगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट भगवान इज सेइंग, दिस इज व्हाट माया कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू ज्ञानम. This is what we will try to do in our classes, coming classes. People are covered by Maya. Lokah yoga Maya samavrattah. Bhagwan Shankaracharya ji says, yoga means the connection or trying together of three gunas. तीन गुणों से योग युक्त, तीन गुणों से युक्त people are covered. और जो तीन गुण हैं, all तीन gunas connected is Maya. It is Maya. By what Maya united to the three gunas they are covered? This we will see in our next class. Please try to seriously. This is why you are Hindu. This is why you are born in this country. This is why you are born as human. प्लीज यूटिलाइज योर दिस फॉर्म. अपने इस जीवन को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कीजिए. सिर्फ अर्थ धर्म और काम के चक्कर में मत पड़िए. ये तो है, बट ये किसके लिए है? ये साधन रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए. मोक्ष माने अपने स्वरूप को जानने के लिए है. देयर इज नथिंग एल्स जी. देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन. No सिंहासन is higher than ईश्वरा himself. कोई सा भी सिंहासन हासिल कर लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री की पदवी हो, चाहे वो राष्ट्रपति की पदवी हो, चाहे इंद्र पदवी हो, चाहे वो इवन वैकुंठ पदवी, इवन भगवान विष्णु की अगर पदवी है तो दैट इज स्मॉलर. इफ इट इज अ पदवी, इट इज नथिंग. अचीव ईश्वरा yourself. This is the purpose of this physical form. You have to. This is the only purpose of human form. And if you will not understand in this form, then you have to go back and cover all. सारे अपनी योनियों से गुजर के फिर मनुष्य. This is what Bhagwan taught in the last chapter. फिर वापस से आपको मनुष्य जन्म मिलेगा. एंड देन यू विल अगेन थ्राइव फॉर नॉलेज. You have to use your brains right away. अभी इसी वक्त भगवान को जानने के लिए ही अपनी शक्तियों का, अर्थ धर्म और काम ये शक्तियां हैं जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है. यूटिलाइज देम फॉर दिस. डोंट वेस्ट देम. Don't waste your precious mind. Don't waste your precious mind into petty things, petty decisions, petty earnings. Utilize your mind, utilize your buddhi correctly. Understand the Maya. Don't remain under the spell of Maya. Break open this Maya and be with the Ishvara. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. ओम ईश्वर अर्पणमस्तु. ओम परमात्मने अर्पणमस्तु. ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्.